Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Pakistan Experience with our most frequent guest. कैसे हैं उजैर यूनुस आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, बिरयानी गरम है, वो सीन चल रहा है किसी इस वक्त। किसी ने आपकी पिछली पॉडकास्ट पे लिखा है कि ही लुक्स लाइक एंड्रू टेट. आई डोंट नो कहाँ से. इट्स रियली इंसल्टिंग टू एंड्रू टेट टू अच्छा, मतलब जिसने लिखा है वो कॉम्प्लीमेंट में लिखा था कि इंसल्ट के लिए लिखा था? ये जरा पूछना चाहिए पहले, मतलब मेरे मकसद क्या था ख्याल समझ से नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से इतने जो आप मैनर्स करते हैं ना, उन्होंने सोचा कि शायद सही बात है। मैं भेज रहा आज हूँ और मैं स्क्रीनशॉट्स आए हैं मेरे पास डेटा एनालिटिक्स के, कितनी टीपी पे जो है डाइवर्सिटी कितनी इंक्रीज है। it's good that we've started on a lighter note because this week has been terrible for Pakistan as most weeks unfortunately in our history. हमारा जो नाजुक मोड़ है वो एक राउंड अबाउट है. आज हम कोशिश करेंगे कि ब्रीफ रखेंगे जो जो मुल्क में हो रहा है वो डिस्कस कर सकें. We have Uzair for a limited time. So let's just start with the news जिसने हम सबके दिल तोड़ दिए. कंडेम करना तो एक छोटी बात है. आपके हज़ारों इख्तिलाफ हो सकते हैं उनकी राय से, उनके ट्वीट से, उनके जर्नलिज्म के अंदाज से, लेकिन जिस तरह बर्बरियत से उनका कत्ल किया गया है, रंजो गम का इजहार उस पे एक छोटा लफ्ज़ होगा. gruesome murder. So was there first your initial reaction when you heard the heartbreaking news of Arshad Sharif's murder? यार, it was how should I put it? It was shocking at first and then literally मतलब एक दो दिन तक तो मैं खुद भी यही सोच रहा था और एक दो दोस्तों को मैंने भी कहा कि यार फिर हम करना क्या चाहते हैं। क्योंकि बेस्ट केस सिनेरियो में अगर अरशद शरीफ एक रैंडम हादसे में उसको गोली लगी, लेट्स अस्यूम दैट्स द बेस्ट केस एक्सप्लेनेशन, वी डोंट नो ऑल द फैक्ट्स। तो वो केनिया में इसलिए था क्योंकि उसका जो राइट टू फ्री एक्सप्रेशन था वो मुल्क में दबाया गया, उसको वहां से निकलवाया गया। ठीक है, दुबई से भी प्रेशर डाल के या वीज़ा एक्सपायर होकर निकलवाया गया। तो एट द एंड ऑफ द डे वो शख्स केनिया में इसलिए था क्योंकि उसको अपने मुल्क के अंदर इजाज़त नहीं थी वो कहने की जो वो कहना चाहता था। वेदर यू लाइक इट और नॉट डजंट मैटर, आई एम अ फ्री स्पीच एक्सट्रीमिस्ट, आई बिलीव के so long as you don't lead to harm on somebody or call on harm on somebody, you should have a right to express yourself. तो ये बेस्ट केस सिनेरियो है। वर्स्ट केस तो हम सोचना भी नहीं चाहते कि जी वहाँ कितना, मतलब इमेजिन सोफिस्टिकेशन ऑफ रीच। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो पॉसिबल है कि पुलिस तक के अंदर आपने पूरी जो है ना वो एक केनिया में राव अनवार ढूंढ ली है, मतलब ये सीन है, राइट। तो इट्स बीन वेरी नॉट डिसअपॉइंटिंग, डिजेक्टिंग, एंगरिंग, ट्रिगरिंग कि क्या हुआ, और फिर उसके ऊपर अब जो सियासत खेली जा रही है वो एक अलग मामला है। But it was very unfortunate, and to me it made me question a lot of things कि मतलब what are we trying to achieve through discourse, through research, through other things that you and I care about. आई थिंक कभी कभी हम दोनों को लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है, फिर आप पुराने पापियों के साथ बैठे हैं तो फिर पता चलता है कि हमें इतना नहीं पता. माई इनिशियल रिएक्शन वाज आल्सो एंगर. मैंने एक पुरानी क्लिप वैज की पॉडकास्ट की निकाल के भी डाल दी. फिर मैं रात को जर्नलिस्ट कम्युनिटी में बैठा एंड देयर वाज जेन्युइन फियर, देयर वाज जेन्युइन रियल फियर. उनसे बैठकर उनसे बात कर कर फिर मुझे रियलाइज हुआ. फिर मैंने भी एक हफ्ता पॉडकास्ट नहीं की. आई वाज आल्सो क्वेश्चनिंग कि यार क्या है, मतलब is doing any of this worth it when this is what can happen. And again conjecture शायद नहीं करते, लेकिन जो circumstances हैं वो काफ़ी questionable हैं. कीनियन पुलिस की एक हिस्ट्री है फॉर बीइंग mercenaries फॉर हायर. सो किसने करवाया ये तो शायद हम नहीं कह सकते, बट हाई चांसेस कि किसी ने करवाया है. Yeah, I mean it पूरी इवेंट जो है, मतलब I don't know about you but मुझे स्पाई थ्रिलर्स पढ़ना बड़ा पसंद है, डेविड इग्नेशियस के, जॉन ले कार्के, मतलब it reads like one of those novels ना कि क्या हुआ उसके साथ. And in terms of fear legitimate इतना है शहजाद के मजाक मजाक में मैं अपने जर्नलिस्ट दोस्त या एनालिस्ट दोस्तों को मैसेज करके कह रहा था कि यार अगर कुछ है तो बेसमेंट डीसी में है, आ जाना, ठहर जाना यहाँ पे. बट इन ऑल सीरियसनेस सम पीपल इवन मैसेज के यार अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें भेजना शुरू कर दूंगा, जस्ट कीप देम सेफ बिकॉज आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, राइट. तो इट इज़ दैट लेवल ऑफ फियर एंड इट इज़ दैट लेवल ऑफ एंग्जाइटी ओवर ऑल ऑफ दिस. एंड मतलब ये होता है कि पावर, even if it was just a fluke accident,
the fact that people are so fearful shows you where we are as a society. कि मतलब and पावर इतना अनअकाउंटेबल पावर इतना बढ़ चुका है कि मतलब काला वीको का जोक जो है वो जोक नहीं होना चाहिए किसी भी मुल्क में, बट है. And there's nothing that is being done about it, आई literally. मीन जो पावर के आपने जिक्र की, इट्स अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ वेयर पावर लाइज। और पता नहीं क्यों लोग बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देते हैं फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट पर। बिल्कुल इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हामिद मीर पे जब गोली चली, बेबुनियाद बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा दिया गया। करीमा बलोच की लाश मिली, बेबुनियाद एस्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा दिया गया। गुराया पे मर्डर हुआ, मर्डर भी मिल गया, उसके कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गए, बेबुनियाद एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगा दिया। असद अली तूर घर पे जाके उनको मार पड़ती है, मतियुल्लाह जान बीच सड़क पे अगवा हो जाते हैं, अबसार आलम को गोली लगती है, बे अनगिनत जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स फ्रंट लाइन पे हैं जो गायब हो जाते हैं, मर्डर होते हैं, मैं पता भी नहीं चलता। बेबुनियाद लोग इस्टेब्लिशमेंट पे हर दफ़ा इल्ज़ाम लगा देते हैं इन सब चीज़ों का। ये जो हंड्रेड्स ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान में मरे हैं, टेंस ऑफ जर्नलिस्ट और डिसेंडेंट्स अब्रॉड मरे हैं, इवन दो मुशर्रफ कहते हैं कि स्टेट की तो ये आई मीन ये ऑलमोस्ट एडमिटेड कि स्टेट की पॉलिसी है कि हम गायब करवा देते हैं बाहर। तो ये बेबुनियाद इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं लगाने चाहिए ना इल्ज़ाम। क्या ख्याल है उज़ैर? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, और सिर्फ सबूतों के साथ बात हम्म, करनी चाहिए. आई मीन, आई गेस दैट्स द, आई थिंक द वन सिल्वर लाइनिंग, इफ यू कैन कॉल इट इवन दैट, एटलीस्ट इन माय सर्कल्स, आई डोंट नो अबाउट यू, कि जो लोग इन पुरानी चीज़ों को डिसमिस करते थे, एक तरह से कोई झटका लगाया उनको भी. मेरे काफ़ी सारे दोस्त कहते थे हाँ यार, मतलब पहले हम कुछ और समझते थे, अब ज़रा समझ आया कि होता क्या है यहाँ पे. तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप दे रहा है दुरुस्त है, अब आगे देखते हैं क्या होता है. But I think there has been that recognition among many, at least of my friends, who previously used to dismiss or not even bother following these things. For example, एक ने कहा कि ये सिर्फ इस एपिसोड का लेटेस्ट देखो क्या ट्रेजेडी हो गई ना, Arshad Sharif was given, and I was like, well, what do you define the episode as? And they were like, well, since vote of no confidence. And I shared stories. I was like, dude, there have been at least 3 journalists killed since that period of time. They just were killed in rural Sindh and were not part of the elite discourse or the elite Game of Thrones that's being played in Pindi in Islamabad. But you did not care. Sindh is 3 times more dangerous for a journalist than any other part of Pakistan. People don't care about those things, right? Maybe this event will make people wake up. More people wake up. I think there's just not enough of them. But बिल्कुल, I don't see. बलूचिस्तान में जो मारे जाते हैं उनका हाँ, नाम और नंबर और रिपोर्ट भी नहीं आती, हाँ, हाँ, वो इसलिए तो आपको मिसिंग के शायद बाद मतलब 6 महीने बाद जो है उनकी लाश कहीं मिलती है और वो कहते हैं कि जी ये लिस्ट पे थे, हमारी दहशतगर्दों की लिस्ट में. डू यू थिंक दैट दिस आल्सो स्पीक्स टू आई हैव नो अदर वर्ड्स अदर देन पंजाबी प्रिविलेज के? मतलब पूरा मुल्क हिल गया और लोग सारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी आके बोल रहे हैं अगर आप ये करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं रह जाता। बट वो यही तो हो रहा है। मतलब ये जब बलोच जर्नलिस्ट के साथ होता है या सिंधी जर्नलिस्ट के साथ होता है या पश्तून जर्नलिस्ट के साथ होता है, तब क्यों नहीं ये रिएक्शन आता? तब क्यों नहीं पूरी कौम निकलती? इज इट टू सिंपलिस्टिक टू से दैट दिस इज जस्ट पंजाबी प्रिविलेज? I don't know. I mean, I don't know if it's just even ethnic, right? It's class-based privilege too. You can layer that into this and weave it in as well. काफी सारी privileges हैं, network है, connectivity to elite groups है उसके अंदर. बहुत चीजें हैं, लेकिन एक चीज तो क्लियर है ना 2018 से कि जो battlefield है, एक तरह से quote unquote civilian supremacy या constitutionalism की, as flawed as that strategy on one or either side might be, the battlefield is now shifted to Punjab. Initially with Nawaz and Vote Ko Izzat Do, and now with Hakiki Azadi of Khan. And as an observer, मैं तो analytically बड़े शौक से देख रहा हूँ कि होता क्या है इस लड़ाई में, क्योंकि अब ये जो कोर वोटर बेस जो इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा सच्चा समझता था 60-70 साल तक, अब उसके अंदर ही जो है ना एक दरार पड़ चुकी है कि वो एस्टैब्लिशमेंट को सही नहीं समझता. एटलीस्ट, एंड वी डोंट नो द डेटा कि वो परसेंटेजेस ओवरलैप वगैरह कितना है, बट क्लियर एविडेंस है कि ईदर साइड ऑफ द मेन पंजाबी पार्टीज पीटीआई एंड पीएमएलएन, there is an anti-establishment core, and that anti-establishment core comes from the same demographics and class and ethnic groups, etc., that the army draws its power from. तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि ये बात कितनी आगे तक कहाँ तक जाती है, बिकॉज इट रियली इज अ concerning moment in that sort of game that has been playing on. प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी आते हैं, बट मे बी जस्ट लास्ट पॉइंट, डू यू फील लाइक कि ये जो
वो जो फिफ्थ जनरेशन वॉरियर्स बनाए हुए थे मखदूम शहाब जैसे, उनका ट्वीट आया कि वो माफ़ी मांगना चाहेंगे हामिद मीर और अबसार आलम और असद तूर जैसे लोगों से जिनका मजाक उड़ाया गया था या उन्होंने मजाक उड़ाया था और दिल आज़ारी की थी जब उन्होंने बोला था कि उनके साथ ये हुआ है। मोस्ट ऑफ द पीपल मॉक्ड देम। अबसार आलम पे जब गोली चली थी, अरशद शरीफ, यस ही इज डेड बट फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, उन्होंने एक बॉलीवुड गाना गब्बर मेरे ख्याल से चला दिया था कि कितनी गोलियां लगी थी जब अबसार आलम को गोली लगी थी। जब डिसेंडेंट्स मिसिंग थे तो उन्होंने आकर उनको मुल्क गद्दारी, बोल टीवी पे एक शो था मेरे ख्याल से, 3 लोग बैठे हुए थे, आई कुडंट फाइंड द क्लिप बट मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने उनके खिलाफ इस तरह की बातें की थी। डू यू नाउ फील लाइक के मे बी जो ये फिफ्थ जनरेशन वॉरियर्स थे उनको थोड़ी रियलाइजेशन हो रही है कि वो किसके लिए काम कर रहे थे और वो गलत थे? आई मीन मोहित पीरजादा आल्सो अपोलोजाइज्ड फॉर हिज रोल इन प्रमोटिंग द पैनामा जजमेंट। डू यू फील लाइक कि ये बस अभी ये लोग पावर में नहीं है इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, या इनकी ग्रोथ है वाकई कोई जेन्युइनली? Yeah, evolution तो होती है ना. I mean, in that example, if you go back, नवाज शरीफ की खुद evolution एक हुई, and हमारी जिंदगी के अंदर हुई. तो I always allow people the room to evolve and think that people evolve and change. In fact, मुझे एक याद है जब मैं ग्रेड स्कूल में अपनी रिसर्च कर रहा था तो मेरी एक रिटायर्ड फौजी से मीटिंग हुई कराची में. And he was doing his PhD at the time, I believe from KU or somewhere else. Civ Mill पे कर रहा था. तो अच्छी बात हुई. I was doing my research on war on terror, and he had served in Waziristan, etc. And he told me something very interesting. He was like, he took me to his library, and there was a stack of like foreign affairs. I can't get my camera right, but it was like 2 foot high stack of foreign affairs magazines, right? And he was like, ये मैंने पढ़ना शुरू किए पता नहीं जब से मैंने सर्विस शुरू की ना, उस जमाने के मैंने खरीदना शुरू किए और पढ़ना शुरू किया आफ्टर रिटायरमेंट. ही सेड समथिंग इंटरेस्टिंग कि वो जो हरे रंग का चश्मा में जो पहनाया जाता है ना, उसका हरा टिंट जो है ना वो कम होने लगा जितने में ज्यादा पढ़ता था ये मैगजीन्स. और वो अब जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है, उसमें हरियाली नहीं रही. Right, because it is part of the curriculum, the propaganda, the narrative that is pushed at from a very young age that people buy into. So I always leave room for evolution. But the problem is that जो जो फैक्ट्री है ये चीज बनाने की वो तो अभी भी चल रही है ना. तो अगर मखदूम साहब या कोई और इवॉल्व करते हैं एट द एज ऑफ 28, 30, 35, 40, whatever that age might be, there will be another 18-year-old behind coming up in the ranks who may be what the communists used to call useful idiot, right? And I think that will continue, and that's the cynical take on this. But evolution hui hai, and in fact I would say that you should, some of these people who are saying we'd like to apologize or we were wrong, you should see if they want to come on your podcast and have a conversation about their own evolution. If anybody who's listening wants to come on, please मुझे message करें, thepakistanexperience@gmail.com. Or if anybody who's listening who can put me in touch with these people and they want to come on, absolutely, we'd always love to talk across the aisle. जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, it's being seen as a huge success by PTI कि हम DG ISI को out in the open ले आए. What's your take on that first? यार टेक ये है कि बैटल लाइन तो अब मतलब ड्रॉन है, सब बिल्कुल क्लियर है कि कौन किस तरफ खड़ा है. द couple of interesting points in that press conference जो मेरे लिए एनालिटिकली इम्पोर्टेंट थे वो ये थे कि DGI ने कहा कि ये फौज की जो लीडरशिप है ये 15 से 20 साल तक यहाँ ही है, तो आपने इनसे ही डील करना है. और इन्होंने फैसला कर लिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे. दैट इज बेसिकली अ सिग्नल टू खान के भाई, if you think you can succeed in this, we basically close ranks, right? Or hum matlab whether you like it or not, we are here. There's no constitutional way for you to win over here because we're not interested in playing that game. At least that's been said openly now. अब वो कितने टाइम तक चलता है, कुछ लोगों ने तस्वीरें भी लगाई थी 2007 वाला के सियासत से दूर हो गई है फौज, और सियासत से दूर नहीं हुई. प्रेस कॉन्फ्रेंस होना ही सिग्नल है फौज के सियासी किरदार का, राइट? तो वो हम, आई एम नॉट बाइंग दैट लाइन. ऑल आई एम सेइंग इज कि वो जो स्प्लिट है बिटवीन खान एंड द कोर कमांडर सो टू स्पीक, और द किंग आर्थर एंड द नाइट्स अराउंड द राउंड टेबल, वो स्प्लिट क्लियर है. आई थिंक दैट वाज इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट. And I think the other thing that was interesting and important from my perspective was that they finally realized that they cannot compete with the
monster of fifth generation warfare that they themselves have created. क्योंकि जो co-optation थी social media digital space पे between the hybrid within the hybrid regime that lasted through 2022 early 2022 वो खत्म हो गई. जब वो खत्म हुई तो इनको अब समझ आ गई कि जो capability थी projection की वो हमारी नहीं थी, किसी और की थी, और वो पार्टी अब हमारे खिलाफ है. तो अब वो डायरेक्टली जा रहे हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया पे प्राइम टाइम पे कम्युनिकेट करने के लिए. I don't think it'll work because they have significant weaknesses for many reasons, much of which you know and your audience knows. But the prime thing is they don't have the capability of keyboards essentially to dominate that narrative. आज मेरे ख्याल में कोई ट्रेंड चल रहा था पॉजिटिव किस्म का DGI के लिए, तो शायद थोड़ी कैपेबिलिटी बन गई है, बट स्टिल लेट्स बी ऑनेस्ट, PTI like kicks ass any day. तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता. आई एग्री विथ यू. आई मीन ज़ियाउल हक सेड 90 दिन में मैं इलेक्शन करा दूंगा. इवन व्हेन ज़ियाउल हक वाज सिलेक्टेड ही वाज लाइक जो बोले आप जुल्फिकार अली भुट्टो. फिर उसी जुल्फिकार अली भुट्टो को लटका दिया उन्होंने. सो the new chief will decide. He will be his own man whatever he does. So these ideas के 15-20 साल तक हमने कोई एक पॉलिसी बना दी है. वो इमरान खान को भी तो 10 साल की पॉलिसी बनाया था ना, फिर 3.5 साल में क्या हुआ. एंड अगेन मुझे आप जियाला बोलेंगे बट क्रेडिट टू जरदारीज विजन. तो वरना मोस्ट लोग यही कह रहे थे कि ये तो 10 साल का मंसूबा है. क्या उसने बैकरूम डील्स किए हैं एस्टेब्लिशमेंट से ये रिश्ता तोड़वाने के लिए? I have no clue what he did to bring us to where we are. We will find out someday maybe, but I think even before that, ignoring the backroom deals, like the chances of a military takeover in Pakistan in this current scenario would have been exponentially higher agar Zardari had not managed to hold his coalition together and pass the 18th Amendment. We should also remember that point, because the removal of 58(2)(b and the 18th Amendment and the decentralization of power meant that the ease with which you could have a coup in Islamabad made it significantly harder. And again, you may not like Zardari, I'm not a fan, but the fact that they managed to pull that off really has held the system, as broken as it might be, and there's nothing much to be positive about the system as it currently exists, but it closed the door to that literal coup. तो अब हाइब्रिड है, लेकिन कूद की तरफ जाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है. Even the PDM, I mean holding that coalition together, लोग कहते हैं जी वही वही फैशिज्म कर रही है. बिल्कुल वही कर रही है, क्योंकि ये उतनी ही सेलेक्टेड है जितनी पीटीआई की थी. उस हाइब्रिड रिजीम का जो मॉडल बना था उसी की एक्सटेंशन ये लोग बन गए. मॉडल बनाने वालों को आप लोग गालियां दें. 2018 इज द ओरिजिनल क्राइम ओवर हियर. In terms of the politicization of Arshad Sharif's murder, I personally find it disgusting from both sides. But अगेन जो हम कहते हैं कि शायद लोग क्वेश्चन करें, मेच्योर हो जाएं, मुझे तो मुश्किल ही लगता है, क्योंकि खान साहब भी मेच्योर नहीं हो रहे. तो वो जो चीज़ कहते हैं उनके सपोर्टर्स वही चीज़ मानते हैं. बट दिस आइडिया कि मर्डर का सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ, दे वर एबल टू सेल इट वेरी सक्सेसफुली व्हेन बेनजीर डाइड और पूरी Yeah, कॉम कन्विंस हो गई थी. I was वही. literally बट about ओवर to say that. हियर I don't think, I mean, I'm known as an Imran Khan hater. I'm not buying के इमरान खान और सलमान इकबाल ने उसको मर्डर करवाया. या मतलब वो अजीब ही अलग किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरी है कि मतलब आप बॉन्ड सुप्रेमेसी की मूवी से भी आगे चले गए कि रिवर्स जो है वो कंस्पिरेसी चल रही है कि ये करवा दो और वो हो जाएगा. नहीं, आई मीन सी देयर इज three high probability events, right? I mean, in terms of the realm of possibilities, I consider three. One, that it was just a fluke. मतलब उसकी मौत, जैसे मेरी अम्मा कहेंगी कि उसकी मौत ही वहां लिखी हुई थी, तो उसको बेचारे को वहां कोई ना कोई चीज ले गई और वो वहां मारा गया. It's like that's what was written in his destiny. दूसरी थी कि establishment on the other end did something. The third is there is a rogue element in the establishment that did something. कैसे हो सकता है किसी ने कहा हो कि यार इसका इलाज करो, राइट? अब वो किसी शाह से ज्यादा शाह के वफादार ने कहा मैं इलाज करता हूँ सर, ये केनिया जा रहा है, उसने कर दिया कुछ, राइट? फॉर मी, scenario 2 and 3 in what I just described have a higher likelihood of occurring than scenario 1, which is a fluke or I anything mean, else. I'll also give you scenario 4 के जो rogue element of the establishment which tacitly support Imran Khan, they could also have been involved. I mean, I'm not Maybe, yeah. dismissing that. But Imran Khan and Salman Iqbal sitting हाँ, together, वो मतलब
ये ये मुश्किल है। भुट्टो प्लेबुक कोई चलाने की कोशिश कर रहा है वापस, उसको बताना चाहिए कि भाई ये 70s का एरा नहीं है, मतलब 2022 में आ गए हैं, अपनी प्लेबुक जो है वो जरा अपडेट कर दें। या बट वही, जब आपने मीर शकील और रहमान को 6 महीने जेल में रखा था तब आप लोग भंगड़े डाल रहे थे। नाउ दैट देर ट्राइंग टू, एंड अगेन ऑफ कोर्स देर सेइंग के हम तो कुछ एलूड नहीं कर रहे, बट द ऑब्वियस इल्यूजन इज के सलमान इकबाल और इमरान खान ने इसको बाहर भेजा था, इनके लोग थे। एंड आई डू थिंक कि जिस गेस्ट हाउस में वो रह रहा था अरशद शरीफ, वो सलमान इकबाल ओन्ड इट। एंड फैसल वाडवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कहा, जिस तरह कहा, क्वाइट ऑब्वियस किन्होंने उनको वो बुलवाया। देर इज नो डाउट वो जिसने बुलवाया है वो उन्होंने टेबल पे भी रख दिया था एक टॉक शो में। बट एक बात उन्होंने सही की कि फ्रॉम द पिक्चर्स एंड द सिनेरियो इट डज लुक लाइक ही वाज शॉट फ्रॉम इनसाइड द कार। Yeah, but I don't know. I woke up this morning just to check the news before you and I spoke, Shazad, और वो आज डॉन की खबर है कि ऑटोप्सी में एक और बुलेट निकली है। इवन दो ऑटोप्सी केन्या में हो चुकी थी, उन्होंने एक बुलेट मेरे ख्याल में मिस कर दी, तो यहाँ निकली है पाकिस्तान में उसकी बॉडी से। और जो इनिशियल उस रिपोर्ट, डॉन की रिपोर्ट है आज की, आई कैन शेयर इट विद यू, कि जो bullet wounds हैं, they seem like it was from the back and his skull was partially smashed on, I think, the left side, if I remember the details. तो मुझे this was a question I had yesterday with a friend I was talking to, कि autopsy हुई भी है कि नहीं, because केन्या में मैंने नहीं पढ़ा था कि autopsy हुई थी, but apparently हुई, and they missed a bullet, and the investigator, PIMS team over here looked at his body, found another bullet as well. तो अब ये अलग सीन हो गया है कि जो बंदूक है वो केन्या में है, और एक पार्ट उस बंदूक से जो निकला था गोली का, वो उसकी जिस्म से यहाँ निकला है पाकिस्तान के अंदर। और ऑटोप्सी में भी क्लैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि कहाँ से एंट्री और एग्जिट वुंड्स थे, बट अपेरेंटली द केनियंस डिड अ शॉडी जॉब एट दैट एज वेल, इफ द डॉन रिपोर्ट इज टू बी बिलीव्ड। और मे बी पिम्स वर मेड टू हाँ, फाइंड और अ बुलेट। PIMS, हाँ, वो जो प्लेटलेट्स वाला सीन हुआ था वैसा ही कुछ चल रहा है। नहीं, फैक्ट देख लेते हैं ना हम कि भाई अच्छा ये तो एक बुलशिट वो है नैरेटिव। जिन लोगों ने बोला कि भाई बच्चा अगर किडनैप हुआ था तो बच्चा गाड़ी में था तो आपने क्यों शूट किया, बच्चा मिल गया था, दे जस्ट थॉट किडनैपर्स उसमें थे। बट 9 बुलेट होल्स हैं मेरे ख्याल से गाड़ी के अंदर। यू सेड समथिंग। समथिंग गुड ऑन व्हाट्सएप के कीनिया में भी लैंड क्रूजर जैसी गाड़ी पे इस तरह पुलिस नहीं हाँ, मारती जिस तरह डिफेंस भी हो। चले ऑल्टो पे मार दिया उन्होंने, लैंड क्रूजर और पे ये मारने बात, से। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा दोस्त केन्या में रहता है, वी वर्क टुगेदर, एंड ही इज नॉट, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान, ही इज लिविंग इन केन्या, ही इज फ्रॉम गाना, आई थिंक, इफ आई रिमेंबर करेक्टली ओरिजिनली। तो उसको मैंने मैसेज किया ना कि यार कुछ अगर स्टोरी कुछ मालूम हो तुम्हारी मीटिंग्स में तो बताना। तो फिर मैंने उसको ये लैंड क्रूजर वाली तस्वीर भेजी, वो भी कहता है कि who the hell would ever shoot a land cruiser in Kenya? No one would ever do that. Like I was like, yeah, I'm from Pakistan. I totally was thinking the same thing. Like V8 land cruiser पे कोई burst fire तो नहीं चलाता। और वो पीछे से आई, सिर्फ पैसेंजर को लगी, 2 और लोग गाड़ी में थे उनको कुछ वो भी नहीं दोनों हुआ। हैं कहाँ ये भी नहीं पता। सो yeah, the more likely scenario is that one of them who was in the car, yeah, somebody stopped the car and did this, and then फिर बॉडी भी जिस अस्पताल में गई वो बहुत 75 किलोमीटर दूर था from where the incident occurred. So yeah, lots of question marks. Here's the other interesting thing, Shazad. Like, so, in some of my conversations, I've been just asking around के process क्या होता है ना, अगर एक पाकिस्तानी किसी फॉरेन मुल्क में मर जाए, या कोई भी किसी शहरी किसी भी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क में मारा जाए, तो यूजली होता ये है कि पुलिस जब उसकी लाश आइडेंटिफाई करती है तो पता चलता है कि जी उज़ैर मारा गया केन्या के अंदर, उज़ैर जो है वो पाकिस्तानी है या अमेरिकन है। तो एम्बेसी, जो लोकल करीबी काउंसलेट होती है, एम्बेसी होती है, उसको बताया जाता है कि जी आपकी मुल्क का सिटीजन मर गया है, आप यहाँ भेजें अपनी टीम को, आइडेंटिफाई हिम, एंड देन विल डू द नीडफुल। एंड देन द एम्बेसी communicates to the local authorities in country of residence or home country, और वो फिर जाके खानदान वालों को बताते हैं। दैट्स टिपिकली द प्रोसेस। अब इस सिचुएशन में हुआ ये है कि अरशद शरीफ, इफ यू रिमेंबर द टाइमलाइन ऑफ द ब्रेकिंग न्यूज, फर्स्ट इट वाज ऑन ट्विटर और व्हाट्सएप के कोई इंपॉर्टेंट बंदा जो है वो केन्या में मारा गया है। ये पाकिस्तानी ट्विटर से बात आ रही थी, पाकिस्तानी सोशल मीडिया से, एटलीस्ट टू मी, आई डोंट नो इफ इट वाज डिफरेंट फॉर यू। वो स्टोरी चलती है, फिर पता चलता है कि अरशद शरीफ जो है वो उसकी डेथ हुई है। अब इस होल सिचुएशन में केनियंस तो बेचारे, उनकी जो ओरिजिनल रिपोर्ट है वो कहती है वो उसको दूसरे बंदे को उसका भाई समझ रहे थे, अरशद का। हम्म
तो अब इतनी जल्दी केनिया में उसकी बॉडी मॉर्चुरी पे जाती है, एम्बेसी वाले भी आ जाते हैं, बट बिफोर इट ब्रेक्स इन केनिया द न्यूज़ इज ब्रेकिंग इन पाकिस्तान दैट अरशद इज डेड. How did that, what was the flow of information? Because if the flow of information is to, in a weird way, to somebody who knew Arshad, who then broke the news in Pakistan before the Kenyans even knew who Arshad was, then that's a question mark, right? तो That's what जो merited this कंस्पिरेसी investigation. थ्योरी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है, आई प्रॉब्ली ये तो शायद फैक्ट ही हो, कि वो कह रहे हैं कि सबसे पहले फोन कॉल सलमान इकबाल को गया था, दैट्स वेयर द फर्स्ट न्यूज ब्रोक के अरशद शरीफ डेड, उनको बताया गया था। एंड देन लॉन्ग मार्च अनाउंस हो गई और बड़े बड़े पोस्टर लग गए अरशद शरीफ के। एंड आई फ्रैंकली फाइंड इट डिस्कस्टिंग जिस तरह पीटीआई भी उसको पोलिटिसाइज कर रही है। पार्टिजन आपने मुझे बोलना है तो बोलने, लेकिन इट्स क्वाइट डिस्कस्टिंग टू सी दैट इतना बड़ा अरशद शरीफ का पोस्टर लगाकर उस पे खून के धब्बे लगाकर, इट्स, आई डोंट नो, आई मीन इफ इट वाज माय लव्ड वन एंड आई सॉ दैट, I didn't like it. I don't know, Yeah. Zair, what's your take on that? No, I mean, my view always has been that don't speak ill of the dead. They're dead, and like, let them be, let them rest in peace, and let if you believe in a God, then let that God judge them for what they did right and wrong. And it's not for us to pass judgment after somebody's dead. And yes, don't play politics or petty Game of Thrones on a dead body. Just don't do it. I find it very uncomfortable, but that again is another signal of how broken things are in Pakistan, okay, and how polarized society is, and how the stakes are so high that nothing matters. Only thing that matters is power and capturing that power. That's all everybody cares about at this point. एंड इससे पहले कि लोग मुझे पटवारी पटवारी बोलना शुरू हो जाएं, मरियम नवाज की ट्वीट ऑन दिस वाज डिस्कस्टिंग, वाज शेमफुल, वाज इनह्यूमेन। एंड आई गेट दैट कि जब मरियम नवाज की वालदा का की डेड बॉडी आई थी तो अरशद शरीफ ने भी यही ट्वीट किया था कि कुलसूम नवाज को पार्सल बनाकर भेज दिया गया है, ये पूरा शरीफ खानदान पार्सल बनाकर भेजा जाएगा। एंड मरियम नवाज वाज इन जेल, तो आई एम श्योर उनके दिल में वो बात रह गई होगी। बट ये टाइम नहीं था पैटी होने का। आप कि अपने अख्तलाफात, मसले मसाइल किसी के साथ हो सकते हैं, या किसी ने आपको बुरा बोला हो, लेकिन अगर आपने एक नेशनल लीडर बनना है तो किसी ने बहुत अच्छा ट्वीट किया था कि मरीम नवाज बेनज़ीर बनने चली थी और खुद इमरान खान बन गई। हाँ, वो टॉक्सिसिटी तो है ना यार, एंड इट्स द थिंग। इसके अंदर एक चीज, आई डोंट नो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, बट मुझे तो सबसे concerning part from a systematic and stability point of view, right, is that कि सारी चीजें personalize हो गई हैं. Khan versus Mariam versus Nawaz, DGI versus Khan versus Bajwa. All of these things are now not issues around ideology or issues around political disagreements or issues around who gets to govern in what way, shape or form. ये पर्सनल चीजें हो गई हैं अब ये जब तक यही लोगों ने इस सिस्टम को चलाना है, नदीम अंजुम ने कहीं नहीं जाना एज डीजीआई, और अगर खान साहब उसे कह रहे हैं ओए DGISI कान खोल के सुनो, तो अब वो भी, उसका भी ईगो है भाई, वो DGI है, मतलब कोई छोटी चीज तो नहीं है ना पाकिस्तान जैसे मुल्क में। तो ये पर्सनलाइजेशन ऑफ द डिस्प्यूट इज आल्सो वेरी डेंजरस बिकॉज इट इनहेरेंटली विल नॉट अलाउ a compromise to be made, which is what we need. Mukmuka is a good word in this instance. Like mukmuka होना चाहिए, मैं तालियां बजाऊंगा अगर हो जाए किसी तरह, लेकिन पर्सनलाइज इतना हो गया है कि नहीं होता नजर आता। एंड इट अगेन शोज यू कि जो इंस्टीट्यूशन की 10-15 साल की पॉलिसी डिस्कस करते हैं, फ्रॉम फैज टू नवीद अंजुम, द वर्ल्ड हैज चेंज। सो ये इंस्टीट्यूशनल कंसिस्टेंसी या इदारा एक पॉलिसी लेके चलेगा, वो इंसान पे होता है, जो इंसान एट द टॉप होगा। और इस पे एक एक I mean, because I sometimes find literature interesting in that sense from other countries that are similar to Pakistan. I don't know if you've read it. Some of your audiences maybe have read it. There's a fantastic book by an Egyptian author called Republic of False Truths. His name is Ala Al-Aswani. He's in exile. Surprise, surprise. सीसी ने उसको मुल्क से दरबदर कर दिया और उसकी बुक किताब बैंड है इजिप्ट के अंदर। उसने काफी पुरानी किताबें भी लिखी हैं ऑन सदात एंड नसर एंड लाइक मुबारक एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ। बट मैंने जब ये रिपब्लिक ऑफ फॉल्स ट्रूथ्स को 6-8 महीने पहले पढ़ी, तो आई वाज लाइक यार ये तो पाकिस्तान का नक्शा खींच रहा है बंदा, इजिप्ट मिस्र डिस्क्राइब करते हुए।
And then you realize that this book came to my mind when Arshad was murdered and the news broke, because I was like, it's exactly what Ala al-Asfani was describing in Egypt, and it's pretty similar in that sense. And if this is the case, the only difference was कि वहाँ सीसी एक मजबूत आदमी है, उसने सबकी फेंटी लगाई हुई है, whether you like it or not. और यहाँ जो है जो हमारे सीसी बनने हैं वो टिन पॉट सीसीज हैं इस वक्त, उनसे कुछ किया नहीं जा रहा. if Salman Iqbal is brought back to Pakistan and is made to say, again मैं ये नहीं बोल रहा फैक्चुअली क्या हुआ, is made to say कि जिस तरह भुट्टो को भी एक बंदे की गवाही पे आपने लटका दिया था, is made to say कि हाँ जी इमरान खान was involved in the murder of Arshad Sharif, how do you think the public will react? I'll dismiss it. I mean, there will again be at least मुझे याद है कि जब मैं बड़ा हो रहा था और बात होती थी कि भुट्टो की उस पे, तो at least in my family most people knew कि it was a BS hanging, right? Even though at that time, if you were living through that period, the propaganda was such. A lot of people I know But also what happened? I mean, okay. sporadic protests happened. उसके अलावा हाँ, हुआ कुछ क्या? नहीं होगा भाई, खौफ तो होगा ना. अभी देखो, तुम और मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारे जानने वाले जर्नलिस्ट वगैरह डरे हुए हैं क्योंकि अरशद शरीफ केनिया में मरा, इवन दो लाइकलीहुड हो सकती है कि किसी एक्सीडेंट की वजह से या कोई फ्लूक इवेंट की वजह से मरा. तो आप सोचो कि अगर आप खान जैसे लीडर को जो है जेल में ही पहुंचा दें इस ट्रम्प्ड अप चार्ज पे, फॉरगेट हैंगिंग, लाइक सिर्फ जेल में आ गया, वो अडियाला में बैठा है, तो खौफ तो होगा ना कि भाई स्टैब्लिशमेंट जो है वो एम्पायर इज स्ट्राइकिंग बैक. एंड फॉर सलमान इकबाल, I think the immediate test, maybe in a few weeks, days, or months, will be whether he is loyal to his money or loyal to Imran Khan. That's basically going to be the And what do test. you think? Huh? And what do you think? I mean, see, this is a place where I actually don't know. काफी लोगों से पिछले हफ्ते यही डिस्कशन मेरी हुई कि लोग कहते हैं, well, how can these guys continue to still side with Khan, right? And I give them two reasons. One, cartels में famous saying होती है कि don't snort your own cocaine because you go native. तो एक हो सकता है a lot of ये them have आपने gone. इमरान खान के सपोर्टर्स के लिए ये एग्जांपल दिए? नहीं, मैं ऐसे ही, हाँ, नहीं, अच्छा समझ. जनरल. मे बी नॉट द राइट एनालॉजी, लोग पर्सनल हो जाएंगे. बट they've gone native. एक आइडिया ये हो सकता है, राइट? सिमिलरली जैसे रशिया के अंदर फॉर एग्जांपल यही लॉजिक अगर इस्तेमाल की जाए कि money or your own money or Putin, right? Who do you sort of stay loyal to? And a lot of people like Khodorkovsky have decided that they're going to go against Putin, even if it means that they lose everything, right? So I'm not going to say what whether Salman Iqbal will go one way or the other, because I think again humans evolve. Sometimes they buy their own propaganda, and maybe he's bought his own propaganda the way a lot of folks in the military bought the propaganda that they were pushing on ARY, and then it became internal and native to them. It happens. That's how propaganda works. You're not immune to your own propaganda, right? So we don't know, but I think likely scenario still, he would pick his money. Any rational person would pick his money and the lagunas and everything else. But there is still a likelihood that he's gone native, because I've seen a lot of people in the PTI go native that I wouldn't have imagined 4 years ago. यार यही मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम एलीट पीटीआई सपोर्टर से है. अगर आप जेन्युइनली ये सारी चीजें बिलीव करते हैं तो फिर आपको सड़कों पे होना चाहिए, फिर आपको इन इश्यूज के लिए लड़ना चाहिए. एंड उजैर जो आप बातें कर रहे हैं आज, वेलकम टू द लेफ्ट. ये लाल मैंने आपके लिए पहना है मैंने थोड़ा सा पहना हुआ है ना शेड डाल के, कि ये एलीट सर्कस है. ये लोग इश्यूज की कोई टेंशन नहीं लेते. ये लोग खुद सिलेक्टेड होने के लिए. एंड बिलाल ने मुझ पर इल्जाम लगाया था लास्ट टाइम कि मैंने पीडीएम के टाइम ये नहीं बोला था, तो मैंने सारी ट्वीट्स निकाल दी थी. मैंने पीडीएम के टाइम भी यही बोला था, मैं भी पीटीआई के टाइम भी यही बोल रहा हूँ. आपके दोस्त हैं, हम दोनों उनको पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं. शुजा नवाज ने अपनी किताब में जब लॉयर्स मूवमेंट का जिक्र किया था, उन्होंने बोला था कि ड्रोन से उन्होंने देख लिया था कि लॉयर्स मूवमेंट हैड द नंबर्स, एंड वो मोटरवे पे ही थे तो उनको फोन आ गया था कि यू हैव द नंबर्स, वी विल एक्सेप्ट योर डिमांड्स. सो लॉन्ग मार्चेस ओनली हैपन टू पुट प्रेशर ऑन द एस्टैब्लिशमेंट unless they're long marches which have been तो done वो by तो the असद उमर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही कह दिया था कि फौज से अगर डिमांड मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन का, तो इसमें कौन सी गलत बात है. so you agree कि ये long march A does not have the numbers. Yes, बड़े जलसे हो रहे हैं, compare करते रहे आप लोग, जलसे don't decide elections, but they don't have the numbers to bring an evolution or to bring down the government. A and B, these long marches as the PDM marches only happen to put pressure in the establishment to become here's selected here's again.
here's the problem with the march, and I think the march may have succeeded if the strategy around it was a bit better. The strategy fell apart in my view, in the sense के आपका गोल क्या है? एस्टैब्लिशमेंट जो है वजीर आजम के पास जाए, कहे कि सर आपने पार्लियामान डिसॉल्व करके इलेक्शन करना है क्योंकि ये मामला आगे बढ़ गया, यही गोल है ना एट द एंड ऑफ द डे, ये करना है आपने। उसके लिए आपने किसी ना किसी तरह, वेदर यू लाइक इट और नॉट, बाजवा और नदीम अंजुम के साथ जो है किसी तरह से मुज़ाकरात करने हैं। आपकी स्ट्रैटेजी है कि अब आप जो है डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आ गए हैं उन दो शख्सियात के जिनसे आपने ये डिमांड निकलवानी है, जो जाएं पार्लियामान को डिसॉल्व करवाएं। तो the strategy itself is going to force them to close ranks, because no DGI will want to be seen as coming on TV, then the next day being called, ओए DG ISI कान खोल के सुनो, और उसके एक हफ्ते बाद वो negotiate करके उसकी डिमांड एक्सेप्ट करे। That is not going to happen. Institutionally नहीं आएगा। 3 stars जो हैं Uzair, कोर if I कमांडर may, की, वो होने ना देंगे। but when Nawaz Sharif and PDM went and named Bajwa and Faiz, the PDM government was in power months later. मंथ्स लेटर, बट सी टैक्टिकली जो उसका इस्तेमाल हुआ था उसके बाद वो खत्म हो गया था ना, द मोमेंट नेगोशिएशंस बिगैन, एवरीथिंग वाज पेपर्ड ओवर, मरियम वेंट क्वाइट, शहबाज स्टार्टेड डूइंग हिज ओन थिंग, ये वो। तो अब आप एंड मोमेंट पे आ गए। खान साहब वाज डूइंग दिस अर्लियर, इट वाजंट अ प्रॉब्लम बिकॉज ही वुड रैचेट अप द टेंशन, बात होती थी, कम हो जाती थी, रैचेट इट अप। अब तो आपने इतना उस कोने में डाल दिया है कि योर डिमांड, इन माय व्यू एंड माय एनालिसिस, दैट there is no opening, very, unless you do immense violence on the streets of Islamabad, it's very unlikely that the other side will give you that opening, because you're forcing them to close ranks. And the higher generals will also align with that perspective, saying कि भाई हम establishment हैं, we cannot be blackmailed like this. And I think that's the strategic flaw in the approach they've taken. Do you believe Imran Khan when he says कि हम तो सिर्फ elections की demand कर रहे हैं? DG ISI, again, you take everything that they say with a grain of salt because they are also stakeholders. But वो जब कहते हैं, और इमरान खान ने मान लिया, I know initial trend चला था कि जो आदमी चाय बिस्किट नहीं देता वो extension देगा, लेकिन इमरान खान ने खुद मान लिया कि हाँ हमने उसको extension दी थी. So yes, do you believe the legitimate demand for elections, or do you think कि बस selected होने के लिए हो रहा है ये सब? I don't think the demand for elections is legitimate, because the demand for elections can only be made in one place, which is Parliament, and the PTI should go to Parliament and talk to the coalition partners of the PTM and break them away and then get elections called. That is the only constitutional way to call early elections in the Islamic Republic of Pakistan. So the demand of elections through protest, whether PTI does it, whether PDM does it, whether the TTP does it, the TLP does it, it's wrong and it's illegal. You have a right to protest. Go protest. No one's. I think they should be allowed to come stay in Islamabad for as long as they want, come what may, and they have a constitutional right to demand whatever they want. But the demand is unconstitutional, and there is no way outside of the parliament to force an election in terms of where the constitution stands. So you go into parliament and do it. If you can't do wheeling and dealing in parliament, then you shouldn't be a political party, in my view. थैंक यू सो मच उजैर, आई नो यू हैव टू रन। लास्ट अगर आप एक स्टेटमेंट दे दें कि डीजी आईएसआई ने बोला कि मार्च 2021 के बाद हम लोगों ने कोई इंटरफेरेंस नहीं की, और उन्होंने बोला कि इन द पास्ट हमारी गलतियां हुई हैं। यू फील दिस इज द क्लोजेस्ट वी विल एवर गेट टू एन एक्नॉलेजमेंट के हमने जो इंटरफेरेंस पहले की थी वो गलत थी, एंड ऑल्सो एक्नॉलेजिंग के पहले हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनली इंटरफेरेंसेस की थी? यार ये तो हर थोड़े साल बाद ये एक्नॉलेजमेंट्स आती हैं। अगर उम्मत या अवाम या डॉन पुराना 2007-8 का आप उठा लें तो ऐसी स्टेटमेंट्स आपको उस वक्त के लीडरशिप से मिलेंगी। आई डू नॉट थिंक देयर विल बी एनी चेंज अनलेस देयर इज अकाउंटेबिलिटी and full on security sector reform. No country in the world has been able to deal with these issues without accountability and security sector reforms. And that itself is not a conversation in Pakistan. Like, matlab, I would be surprised if you can find 5 people to bring on your podcast who can tell you what are the legal steps and things that need to happen to bring accountability and security sector reform in Pakistan. काम ही नहीं हुआ उसके ऊपर इतना ज़्यादा, आई right? मीन खुर्रम हुसैन केम ऑन द पॉडकास्ट एंड सेड कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट इसलिए गिराई थी क्योंकि मुशर्रफ का ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। तो अगर मुशर्रफ हाँ, का भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती तो सिटिंग हाँ, पीपल की अकाउंटेबिलिटी तो मतलब एग्जैक्टली कहाँ पहुंच एग्जैक्टली। गए तो हम? मतलब अगर अगर एक शख्स है जो अपने बॉस के ऑर्डर्स वायलेट करने के बाद इस्लामाबाद में मुलाकातें करता है,
और वो अभी तक अपनी पोजीशन पर है, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर उसका बॉस के खिलाफ हो जा रहा है और उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, तो बाकियों को तो आप भूल जाएं। उजैर, ये बातें करने से पहले सोच लिया करो कि तुम तो डीसी में हो, मैं मैंने पाकिस्तान में रहता हूँ। मैंने क्या, मैं तो असद उमर की बात कर रहा था कि वो बिल्कुल। पता कर रहे थे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच उजैर। Thank जाएं आप अपने रन पर या जहां भी आप जा रहे थे। बस प्रिडिक्शन दे दें, लॉन्ग मार्च अभी चल रही है, खान साहब खुद तो घर चले गए, प्रोटेस्टर सड़क पे ही थे रात को। क्या प्रिडिक्शन है कि क्या करेंगे? लग तो नहीं रहा कुछ होगा। या प्रिडिक्शन ये है कि केपी जो है वो मैन पावर देगी टू गेट पीपल इनटू इस्लामाबाद एंड क्रिएट अ शो, बट आई डोंट थिंक विदाउट वायलेंस दे गोना अचीव देयर गोल्स। Hopefully there is no violence. None of us should stand for violence. Thank you so much, Uzair. And thank you everybody for listening. Take care. Bye bye. बंदे बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पे 7 गरीब तरीन कॉलोनी है, मैं यहाँ पे कार बाद में घुस जाए, ये कौन सी प्रभाव हो जाए। उधर का 7 कौन सी गरीब तरीन जगह कौन सी है वो जो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के बाद टूटपादे के बाद लेफ्ट साइड पे टॉप सिटी है, कैपिटल है, कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है, बताएं। टॉप तो एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे है ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको, मैं वो मुझे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है नक्शा। हाँ, मैं बंदे और सामान वहाँ रेडी रखे हैं आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। बस रास्ते में है इंशाल्लाह।